Hi everyone, welcome back to the channel. So today we are going to study useful English vocabulary. Itch. Itch means होता है खुजली, which means an uncomfortable sensation on the skin that causes to scratch. Example, I feel itchy all over my body, which means मुझे अपने पूरे शरीर पर खुजली महसूस होती है. Itch means खुजली. Next word है relish. Relish means great enjoyment when you enjoy something. किसी वस्तु का आनंद लेना. Example, I always relish a challenge. मैं हमेशा चुनौतियों का आनंद लेता हूँ. I always relish a challenge. वो मीन्स होता है प्रॉमिस करना. वो वादा करना. Example, she took a vow never to lend money to anyone again. उसने फिर कभी किसी को पैसा उधार ना देने का संकल्प लिया या वादा किया. वो मीन्स वादा. Reluctant means अनिच्छुक, which means unwilling. Example, it was a reluctant farewell. यह एक अनिच्छुक विदाई थी. Reluctant. Ostentatious means दिखावटी. Pretentious, when you show something. It was a social event more ostentatious than emotional. यह भावात्मक की तुलना में सामाजिक घटना थी या कार्यक्रम था. It was a social event more ostentatious than emotional. Ostentatious means दिखावटी. Exuberant means full of energy and excitement. Exuberant. उत्साही, उल्लासपूर्ण. She gave an exuberant performance. उसने उल्लासपूर्ण प्रदर्शन किया. Nostalgia. Now what do you mean by nostalgia? Nostalgia means पुरानी यादें. Example, looking back at old photographs always brings back a sense of nostalgia. Nostalgia means पुरानी यादों को वापस दोहराना. Looking back at old photographs always bring back a sense of nostalgia. पुरानी तस्वीरों को देखकर हमेशा पुरानी यादों का एहसास होता है. Containment means the action of keeping something harmful under control or within limit. नियंत्रण रखना, कुछ ऐसा harmful चीजों को नियंत्रण रखना. The government is pursuing a policy of containment. सरकार नियंत्रण की नीति अपना रही है. Chaotic means disorder, confusing. अस्त व्यस्त. Example, it was really chaotic just before the show started. शो शुरू होने से ठीक पहले यह सब अस्त व्यस्त था. Solitude means a lonely. अकेलापन, एकांत. That means solitude. Example, and he enjoyed the solitude. और उसने एकांत का आनंद लिया या अकेलेपन का आनंद लिया. And he enjoyed the solitude. Incentive means a thing that motivates or encourages someone to do something. When you get motivated or encouraged by something, that means incentive. प्रोत्साहन. Incentive means प्रोत्साहन. Example, a little bonus will give the employees an incentive to work harder. थोड़ा बोनस कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन देगा. Incentive means प्रोत्साहन. Lob means उछालकर फेंकना. Lob means उछालकर फेंकना, which means throw or hit in a high arc, to throw something. You should lob the ball high.
आपको गेंद को ऊंचा फेंकना चाहिए. You should lob the ball high. Temptation. Temptation means the desire to do something, especially something wrong. Temptation. लालच, लुभाने का तरीका. I couldn't resist the temptation to open the letter. मैं पत्र खोलने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका. Meritorious. Meritorious means deserving praise or reward. सराहनीय. Example, everyone wants their work to be meritorious, but many fall short due to lack of efforts. हर कोई अपने काम को सराहनीय चाहता है, but many fall short due to lack of efforts. लेकिन efforts कम डालने की वजह से नहीं कर पाते लोग. Persuade. Persuade means मनाना, राजी करना. Example, how did you persuade mother to agree to this? आपने माँ को इस बात के लिए कैसे राजी किया? Preachy. Preachy means उपदेशात्मक, moral advice देना किसी को. To give moral advice in self-righteous way. बिना मांगे किसी को moral advice देना, उपदेशात्मक. Your tone was so stern and pure and preachy, it excited me. आपका स्वर इतना कठोर और शुद्ध और उपदेशात्मक था, इसने मुझे उत्साहित किया. Preachy means उपदेशात्मक. Vivacious. Vivacious means जिंदा दिल. Exciting and attractive. She was charming, intelligent and vivacious. वह आकर्षक, बुद्धिमान और जीवंत थी. मीन्स जिंदा दिल थी. Vivacious means जिंदा दिल.